Good morning, students. Welcome back to my new video. In today's class, we will start a new chapter from your English literature book. The name of our chapter is Travels by the Fireside, and the poet of this poem is H.W. Longfellow. Travels by the Fireside. You all know what is the meaning of travels. Travels means traveling karna. Now, what is fireside? You can see a picture on the screen. There is a room, and in one corner there is a fire. That means in earlier times the American poets used to sit near the fireside and they read their books, write their books, or do their imagination while sitting near the fireside. That means पहले के जो पोएट्स होते थे, अमेरिकन पोएट्स होते थे, वो फायर साइड के पास बैठ के अपनी बुक्स लिखते थे या कोई इमेजिनेशंस करते थे या कोई स्टोरी की बुक्स पढ़ते थे. So that is called fireside. In this poem, the poet is described as an armchair traveler, means a traveler who talks about traveling but does not have any experience of traveling. In this poem, the poet is not traveling in actual, he is just doing his imagination that he is traveling and exploring the world, which is in real is not true. That means इस पोअम में जो पोएट है वो बस इमेजिनेशन कर रहे हैं कि वो ट्रैवल कर रहे हैं, बट एक्चुअल लाइफ में ही इज़ नॉट ट्रैवलिंग, ही इज़ जस्ट डूइंग हिज इमेजिनेशन. सो जो भी इमेजिनेशंस वो इस पोअम में डिस्क्राइब किए हैं वो उनकी इमेजिनेशन पे बेस है. वो एक्चुअल में वहाँ जाके ट्रैवल नहीं कर रहे हैं, बिकॉज एक्चुअली जब आप ट्रैवल करते हैं जन जो एक्सपीरियंस होता है वो बहुत अच्छा होता है, बिकॉज वो आपका रियल एक्सपीरियंस होता है. बट अगर कोई चीज़ें आप इमेजिन करके करते हो देन वो आपकी इमेजिनेशन पे बेस होता है. नाउ लेट्स नो अबाउट द पोएट H.W. Longfellow. H.W. Longfellow was born in 1807 and he died in 1882, was an American poet who remains a popular name in children's poetry. Mainly writing lyric poetry, he is known for his use of simple language and his ear for music. He is known as a storyteller, writing about American life, myths, and legends in poems such as Paul Revere Ride, The Song of Hiawatha, and Ingvaline. Now, students, I will read the whole poem and then I will explain you line by line. The ceaseless rain is falling fast, and yonder gilded vane, immovable for 3 days past, points to the misty main. It drives me in upon myself, and to the fireside gleams, to pleasant books that crowd my shelf, and still more pleasant dreams. I read whatever bards have sung of lands beyond the sea, and the bright days when I was young come thronging back to me. In fancy I can hear again the alpine torrents roar, the mule bells on the hills of Spain, the sea at Elsinore. I see the convent's gleaming wall rise from its groves of pine, and towers of old cathedrals tall, the castle by the Rhine. I journey on by park and spare, beneath sentinel trees, through fields with poppies all on fire, and gleams of distant seas. I fear no more the dust and heat, no more I can fear fatigue, while journeying with another's feet over many a lengthening league.
Let others traverse sea and land and toil through various claims. I turn the world round with my hand, reading these poets' rhyme. From them I learn whatever lies beneath each changing zone, and see, when looking with their eyes, better than with my own. Now, students, see the first stanza of a poem. The ceaseless rain is falling fast, and yonder gilded vane, immovable for 3 days past, points to the misty main. Here, the meaning of ceaseless means non-stopping rain. Yonder means over there. Gilded means shining. Vane means a blade that shows the direction of the wind, and immovable means not able to move, and main means mainland. In these lines, the poet tells about the joy of armchair traveler. He depicts the indoor scene, that there is a rolling fire in his library while it was raining continuously outside. Like ceaseless rain means it was raining continuously. Due to heavy rain, the whole atmosphere was fresh and bright, and it's been raining for last 3 days. That is why the poet is not moving from his place, and due to rain the mainland is foggy and shining. That means यहाँ पे जो पोएट हैं वो आर्म चेयर ट्रैवलर के बारे में बता रहे हैं, एंड जो सीन यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहा है वो एक इंडोर सीन है जहाँ पे पोएट अपने लाइब्रेरी में बैठे हैं, एंड उनके उसी रूम में फायर साइड है। एंड पोएट यहाँ बता रहे हैं कि कंटिन्यूसली 3 डेज से बारिश हो रही है बाहर, एंड बहुत हैवी रेन हो रहा है, जिसकी वजह से पोएट अपनी ही प्लेस पे हैं, वो अपने घर से बाहर नहीं निकले हैं। एंड रेनिंग की वजह से, बारिश की वजह से जो बाहर का जो एटमॉस्फेयर है वो बहुत फ्रेश हो गया है, बहुत ब्राइट हो गया है, एंड द एटमॉस्फेयर इज़ फॉगी एंड शाइनिंग। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट स्टैंजा। It drives me in upon myself, and to the fireside gleams, to pleasant books that crowd my shelf, and still more pleasant dreams. Here, the meaning of gleams means shine. Here, in these lines, it stands for the falling rain. You can see the sentence given here, it drives me in upon myself. So it here reflects to the falling rain. So यहाँ पे it stand कर रहा है, एक falling rain के बारे में बताया जा रहा है। And here myself means the poet. The poet is talking about himself. In this line, the poet is talking about travel, which is available to him in the books on the shelf inside the house. And where is the shelf? Shelf is in the library. So यहाँ पे जो poet हैं वो अपनी बुक के बारे में बात कर रहे हैं जो कि आप उनकी शेल्फ पे रखी गई है जो लाइब्रेरी में है। It leads him to read books and experience things in his imagination. So यहाँ पे जो पोएट हैं वो अपनी बुक्स पढ़ रहे हैं एंड वो एक्सपीरियंस कर रहे हैं, जो भी चीज़ें उस बुक्स में लिखी गई हैं उसे वो इमेजिन कर रहे हैं, बट वो चीज़ वो अपनी रियल लाइफ में नहीं कर रहे हैं, वो बस उनकी इमेजिनेशन है। एंड द पोएट इज़ enjoying a lot. Now, moving to next stanza. I read whatever birds have sung of lands beyond the sea, and the bright days when I was young come thronging back to me. Here, the meaning of birds means a poet, and the meaning of thronging means crowd. In these lines, the poet had read
already about different places and lands beyond the sea, which is beautifully explained by the poet. And the poet was recalling the memories of his youth, and these memories give lot of satisfaction to the poet. That means यहाँ पे जो poet हैं वो डिफरेंट प्लेसेस के बारे में बता रहे हैं, जो वो प्लेसेस वो पहले से विजिट कर चुके हैं, एंड ही इज़ रिमेम्बरिंग, वो अपनी मेमोरीज को याद कर रहे हैं, जो इनकी यूथ की जो मेमोरीज, जो पहले की जो मेमोरीज थी उनको वो रिकॉल कर रहे हैं। एंड जब वो अपनी पुरानी मेमोरीज को रिकॉल कर रहे हैं उससे उनको बहुत हैप्पीनेस मिल रही है, बहुत ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिल रही है। सो इन दिस पोएम द पोएट इज़ अ आर्म चेयर ट्रैवलर। जो पोएट है वो एक आर्म चेयर ट्रैवलर है। एंड द एडवांटेज ऑफ बीइंग एन आर्म चेयर ट्रैवलर कॉस्ट नथिंग एट ऑल। मीन्स आर्म चेयर ट्रैवलर बनने के लिए आपको कुछ भी देने की ज़रूरत नहीं है। देयर विल बी नो फीलिंग ऑफ टायर्डनेस। यहाँ पे आप टायर्डनेस फील नहीं कर सकते हैं। नो स्ट्रगल विथ लैंग्वेज एट्सेट्रा। दैट मीन्स जब आप कहीं ट्रैवल करते हैं, देन आप जब ट्रैवलिंग करते हैं, देन आप ट्रैवल करते करते थक जाते हैं, एंड डिफरेंट प्लेसेस पे आप जाते हैं जहाँ पे लैंग्वेज डिफरेंट होती है, कल्चर डिफरेंट होता है। बट यहाँ पे आप घर में ही बैठ के जब आप बुक्स पढ़ेंगे, स्टोरीज़ पढ़ेंगे, एंड अपनी ट्रैवलिंग को, जो पहले के जो पोएट्स हैं जो उन्होंने अपनी बुक्स में लिखा है, ट्रैवलिंग के जो एक्सपीरियंस उन्होंने जो शेयर किया है, उसे जब आप पढ़ेंगे, इमेजिन करेंगे, देन वो जो फीलिंग होती है वो एकदम डिफरेंट होती है। जो रियल ट्रैवलिंग होती है उससे बहुत डिफरेंट फीलिंग होती है। बट यहाँ जब आप बस पढ़ के इमेजिन कर ले रहे हो, देन इन केस में आप टायर्ड नहीं फील कर रहे हो। देयर इज़ नो स्ट्रगलिंग विथ लैंग्वेज, and you can take you and this can take you over the world to places you could not even afford to visit. On the other hand, armchair traveler faces nothing more than a spit of cup of coffee and the library charging, and you for the cost of replacing a damaged book. So यहाँ पे जो आर्म चेयर जो ट्रैवलर है उनकी बहुत एडवांटेजेस बताए गए हैं इस पोएम में, कि आप घर पे ही बैठ के डिफरेंट बुक्स पढ़ सकते हैं, एंड जो पोएट जिसने वो बुक्स लिखी हैं उनके जो एक्सपीरियंस है ट्रैवलिंग के उसे आप पढ़ के उसे इमेजिन कर सकते हैं। यहाँ पे आप टायर्ड भी नहीं फील करेंगे बिकॉज आप ट्रैवल नहीं कर रहे हैं, बट जो भी आप इमेजिनेशन करते हैं ये आपकी इमेजिनेशन पे हैं, रियल में आप वो ट्रैवलिंग नहीं किए हो, ये किसी और का एक्सपीरियंस है जो आप पढ़ रहे हो बस। ओके, सो इन आवर नेक्स्ट क्लास वी विल डू मोर स्टैंजास of this poem. Now I will end my class. All of you don't forget to write your name, class with section for your attendance. Thank you class.